दोस्तों हम राधा जी के घर में, राधा जी एंड रवि जी के घर में हैं। हैप्पी नवरात्रि सबको। राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। So Golu is थोड़ा सा साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। हम लोगों का जो ये प्रोग्राम है इसमें हम लोग बेसिकली डॉल्स कलेक्ट करते हैं एंड वी डिस्प्ले देम इन हायरार्किकल ऑर्डर। तो ये ऑड नंबर्स में रखा जाता है, आइदर 3, 5, 7। और आइडिया ऐसा होता है कि मतलब इसके थ्रू हम कहानियाँ सुना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टीच एंड this gets started when a girl gets married. So the first toys that are given to a girl when they get married are these two. They are called marapachi bomme. तो maram means wood और ये wood की बनी हुई dolls हैं। तो शादी के टाइम पर they are given to the girl to get this golu started. And over the years, girls will collect dolls, and Navratri time they will invite everybody, all friends and family. They'll come together, sing. और हम मानते हैं कि 10 दिनों में इन डॉल्स को भगवान की तरह ही माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और जैसे आप देख रहे हैं, everybody here. Every year the dolls get added, the new dolls. So they just come, the kids come and add it. If I wish doll has been added this year, and then they come to know that and people also give people gifts, a gift of their dolls, like if they want. That's right, yeah. So wow, it's a tradition. So I mean, like if you see, I probably don't have any of my original dolls because when I started there was not too many because I kept moving countries. But over the years it's been growing. और अभी तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि we can't display all the dolls because too many dolls now. लैडर भी छोटा पड़ जाएगा. And we've got this arrangement, so it keeps growing. As you can see, it's sort of on the sides now, and then we have side stories and lots of theme-based stories we will have. But generally, if you can see, like this Dashavatar, which is a very common thing. If you see maybe the third step down, Das Avatar है. उसके बाद अष्टलक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है सारी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसे कुछ हैं, जैसे देवी सरस्वती हैं। और ये हर किसी के घर में अपने अपने उसके हिसाब से अलग अलग मिलेगा, उनके घर की प्रथा के हिसाब से जो भी है, उनके घर में जो मान्यता है उसके हिसाब से अलग अलग मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुंभकर्ण की स्टोरी दिखाई गई है, कुंभकर्ण लेटे हुए हैं। तो दैट इज द स्टोरी दैट्स बीइंग शोन हियर, visual representation of all the stories. So Aparna, you can talk about it a little. Yeah. When I was growing up, we used to grow a garden out of mustard seeds because it grows very quickly and it looks like a cricket garden. So you can actually make a big whole garden with cricketers. There would be dinosaurs every now and then. It's just kids can play with their own creativity and it would look lovely. So people who sort of grow up in that kind of environment, they know Golu, like this is the time. And the thing that is sort of the prasad for Golu is called Sundal. So that is very special. So Sundal like different Navadanya, like 9 types of lentils actually. Yeah, each day. One day we'll do like kabuli chana, one day will be like rajma chana. Then one day you can do black eyed peas, kala chana. So everything you do different things. Like see, my father was in the Navy, so I had dolls from all over the world. So in our house, my aunt's house, we used to have the Golu. The Golu would be twice the size of this room. There would be steps, and they would be all like the one would be like a bridal procession, and one would be like Manhattan, one would be what airport, Lincoln Memorial Airport. It was so much. It will take you 3 days to put the Golu and 3-4 days to Check it out. That's right. That's the other one. That is a full time effort. But it brings out that positivity, and there's a lot about energy, right? This is the time we talk about energy in various ways. So all the side things like the park and all that we've created, it just shows that how people engage in various activities. It's not just spiritual, but day to day there's so much activity, energy happening everywhere. So we try to depict all that through our side stories and all. So and also it's a time for everybody to get together, the ladies to get together and meet one another and things like that. And in those days there was not much TV or anything else, so this was a opportunity for people to entertain and sing and
invite our friends and neighbors and sing together. Singing is the big thing. So we always wait for people who are singers, like Gayatri, they'll come and they'll sing. Harini is going to perform today. So we really look forward to all the singers who are coming and singing. हाँ, और ये जनरल ये प्रथा जो थी ना, ये मंदिर के आसपास के लोगों के घरों की ही है, मतलब people who used to live around the temples. And this is like it's more of a ladies' way of engaging other ladies, because they never used to have any activities for themselves. So this was one way of calling over other ladies, because generally they never had this opportunity of inviting others. Usually they'll all meet in the temple and do things. So this was one time they could get other people to come to their houses. So it's a way of engaging with others. How it has changed throughout. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बचपन से जो आप लोग गोलू बनाते आ रहे हैं और अब जो अब आप लोग शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, क्या चेंज हुआ या वैसे ही चला रहा ट्रेडिशन? What has changed? We used to even go to strangers' house. You're always welcome. Like no one says, you can't. Who are you? They never ask you during the Navaratri days. You're all like everyone's welcome. So I can now we get appointments to go. Shall I come this time? Shall I come? हाँ, but boy, that's what has changed. It has changed. लेकिन गोलू की significance वही है अभी. So I have been invited by Radha for the past 12 years, so I can so proudly say how everything has evolved and changed. When the kids were little, they used to keep the Lego blocks or something like that. I remember having an edible garden, and then I remember she had some paper, what was that? Paper crafts. Paper crafts, the kids did that. So as the kids grow up, you can see that reflected on the Golu. So that's what I have noticed from the Golu. So Also, past what the 12 years, traditional ones will usually remain, but you add modern ones also. तो जो आप देखते हैं वो अब गोलू पे उसको डिस्प्ले पे लगा देते हैं, मतलब it has evolved, it has matured, and it has changed. It has a lot. grown with Grown the kids. kids It's grown as with the Radha's family, so now it's reached up to they can keep finding इसको सोशल मीडिया का ऐड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया ऐड करो, फेसबुक और सब नया ट्रेंड. I remember a small Lego toy sitting there making small railway train used to go around, those Thomas engine used to go around, so and then used to be water pool. So my next question would be from the youngsters, because mom and dad has played with all these dolls and toys they have been talking about, but things have changed. You guys are playing on the digital platform. How do you still follow the Golu, or do you display, or do you help your mom and dad from this? Every year since we've started doing Golu, like usually the crafty kind of thing is something that I participate in. I always try and add some sort of craft element to this. So yeah, like Ananya was saying before, we had the edible farm. So one year we made a farm, and the grass, the soil, everything was edible. So with M&Ms or chocolates or anything. Last year I did Colored yeah. Last year I did a crochet. So all of my items that I had crocheted throughout the year, I just had them displayed. So it's kind of something that I look forward to every year. It's like a time for me to showcase whatever new thing I've started learning about. Do you put your laptop or digital devices? Mobile and Digital stuff always stays. Games. social media. Aside from the lights, everything is absolutely away from digital. We keep everything traditional. With traditional. व्रत होता है वो ये different type का व्रतम you have that. जो So होता this is like a social media व्रतम. Okay. Somebody was telling yesterday at one of their houses that they haven't touched the phone. They gone into social media for the past 9 days. This is the time. 9 days, 10 days, you should stay away from the social media. And devote your time to the God or to the Golu or and the socializing. Yeah. जो शायद हम लोग कोविड में मिस किया था. तो हाउ डू यू, मतलब आप अपने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स के साथ मिलते होंगे, तो उनको कैसे आप समझाते, हाउ डू यू एक्सप्लेन टू देम कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है. How do do you invite them? Do you mix with them? I've called my friends over to have a look at our Golu because it's a very big time for us. We spend a lot of time setting it up. Yeah, exactly. So I explain it to them. It's a 10-day festival where we spend a lot of time setting up our Golu.
with lots of the different stories about all the different gods. We'll have some sort of craft elements displayed. And it's just like it's a fun social activity for everyone. Everyone comes over. Because Australians, they normally display only during Christmas or Yeah. Easter time. So for them, it's Something similar, but it's different. It's probably a bit different for them because this is a 10-day festival, whereas for them, kind of celebrations are maybe 1 or 2 days max. And then they have the Christmas decorations for 1 month. So this is same, Yeah, putting same out kind and of packing thing. it back. So Bilkul. we have our Boxing Day. Yeah. Like after Navratri. आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो यूएस से आई हैं, भाभी जी नमस्कार। कैसे हैं आप? The main thing here is about, when she's talking about creativity and all that. So Saraswati, because Navami, it all leads up to the 9 days. We believe in Saraswati. So this is about creativity and giving girls, young girls, like one of the other ladies was saying, how anybody is welcome. So traditionally in India, like little children will, girls and kids will, neighborhood children will come into anybody's house and and they all want to eat shundal from that house. Shundal is the chana, that whatever form of chana is being served that day. Chana with coconut or just chana? With chana, wo cooked with coconut hota hai, different way, with plain tadka, with mirchi, with some masala in it. Every day it varies. And so children enjoy that कि हमने we went to somebody's house, we ate this, we ate that, free में खाना मिल रहा है. तो उस घर में क्या होता है that they will say, oh, the price of eating the shundal is you have to sing a song. So the kids are made to sit, they will sing a song, and then they'll eat the shundal and happily, merrily go to the next house. So it's a fun time basically. ये साउथ में, नॉर्थ में जो होता है कंजके होता है, जो हम लड़कियों को, यंग कन्याओं को बुलाते हैं और घर में खाना खिलाते हैं, उसमें वो पूड़ी चना हलवा एग्जैक्टली वही चीज है। अष्टमी के दिन आप लोग करते हैं, नवमी के दिन होती है। हाँ, अष्टमी और नवमी के दिन आप वो लड़कियों, कन्या लड़कियों की वो पूजा करते हैं। Here we celebrate all 9 days. So it's and basically it's a fun time for kids, and also it's a time for them to display their vocal talents. And they sing, but all your parents are taking them to classes, teaching them, so it's a time for them to sing अपना talent दिखाओ और कोई सुन लेता है, maybe they may think, oh come on, this child has an amazing voice, she's going to be the next whatever, Lata Mangeshkar or whoever, Lakshmi or something like that. Or also and it also I think gives kids that platform to be able to sing in front of others. They're not shy, right? Show their talent, like and they learn how to basically to speak, to sing in public, so that they don't. Communication अच्छा होता है, and then coming out of the room, नहीं तो बंधे रहते हैं with this. So these things are important. So, Very good. And it's nice that we still. I think many of us, especially in Australia and the US, I don't know how many people in India are still doing this, but we make it a point to do it so that our children learn these traditions, because otherwise they would not. बिल्कुल सब भूल जाएंगे. Because after us, this generation just come from India, and I don't know how much my children will exactly. possibly follow this. So I will keep doing it. Very good. हाँ, राधा जी बताइए, जो आपने गोलू का हायरार्की सिस्टम है, इसमें तो हायरार्की ऐसे होती है कि द फर्स्ट द बॉटम मोस्ट इज अबाउट ह्यूमंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं. तो जैसे कुछ दुकान में कुछ आइटम बिक रहा है, या फिर जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जो हमारे ह्यूमन जो नेता लोग हैं. सो दैट इज हाउ इट इज सॉर्ट ऑफ शोन एट द बॉटम थिंग्स. Again, it keeps rising up, and because of the different sizes of the dolls, I may not have followed the exact hierarchy, but usually that is the idea कि हम लोग जैसे मनुष्य से लेकर के हम धीरे धीरे देवता तक पहुंच जाते हैं हमारी स्पिरिचुअल राइजिंग में. So that's how it carries on. मंदिर हैं, डिफरेंट मंदिरों का डिपिक्शन होता है. ये जैसे भगवान जी हनुमान जी के ऊपर विराजित हैं, सरस्वती माँ हैं, और उसके बाद में लक्ष्मी, ये अष्टलक्ष्मी है. उसके ऊपर देखा जाए तो दशावतार की कथा है, तो पूरे 10 अवतार हैं और लाइन से लगे हुए, मत्स्य अवतार से लेकर के मत्स्य पूर्व, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, और आने वाला अवतार कल्कि. उसके बाद शिव परिवार, सब सदस्य हैं शिव परिवार के, मुरुगन हैं, देवी हैं, गणेश जी हैं, और ऊपर जो
वामन अवतार थे, उन्होंने जो 3 पग में धरती नापी वो दिखाई गई है, और उसके नीचे राजा बलि बैठे हैं, उस तरफ नरसिंह भगवान की मूर्ति है। तो ये एक तरह का प्रोसेस, मतलब वो है स्पिरिचुअल राइज है। और फिर अगर आप देखें तो उसे साइड में भी दिखाया गया है, यहाँ पर कुंभकर्ण की स्टोरी दिखाई गई है। तो कुंभकर्ण लेटे हुए हैं, उसके ऊपर कब सब लोग आवाज़ बना दे रहे हैं और साइड में नॉइस हो रही है। तो जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको रख करके स्टोरी को दर्शाया गया है। और इसके आपने अलावा संगीत को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वो सब भी एक्टिविटी का स्वरूप है। तो जैसे आवाज़ कर रहे हैं, चीज़ें हैं, वो सब भी एक तरह की एक्टिविटी है। उस तरफ शादी दिखाई गई है, तो टिपिकल साउथ की शादी दिखाई गई है। यहाँ पर शादी हो रही है, हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं। अच्छा। और ये जो हैं, ये पंडित जी हैं, शादी करवा रहे हैं। बीच में आग वो दिखाई है, पीछे लोग लिफाफा लिए खड़े हैं, शादी हो तो खत्म करें। उस पे जाता है। हाँ, और इस तरफ जो है ये पंडाल लगा हुआ है, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अरे वाह। तो ये सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, वो रसोईया है, वो लोग सर्व कर रहे तो हैं। जिसने पैसे दिए उनको ही खाना मिल रहा है या सबको मिल रहा है? है मतलब, हाँ, वो जो लोग, कई लोग तो शादी देखे बगैर खाने के लिए पहुंच गए। उसके अलावा जो नीचे मैंने बनाया है, हाँ, ये बड़ा जो एक्टिविटी है, दिस इज टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट हैपन ऑल अराउंड अस। तो इफ यू मिनी फ्लोरियार्ड जैसा। हाँ, तो फ्लोरियार्ड जैसे अभी आजकल चल रही है एक्टिविटी, तो मैंने थोड़ा बहुत वो दिखाया है, जस्ट टू शो द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है हमारी लाइफ में, तो उस चीज को दिखाया गया है। पीछे जो है वो गांव का सीन है, घरों में जो चीजें हो रही है, चक्की में आटा पीस रहे हैं या मसाला पीसा जा रहा है, या फिर हल जोत रहे हैं, खेत में काम हो रहा है, वो बहुत बढ़िया। और आपने कुछ जापानीज या थाईलैंड टच दिया है? हाँ, वो चाइनीज टेम्पल है, Chinese। जिसमें बुद्धा की मूर्ति है। और इस तरफ थोड़ा सा करंट अफेयर्स। अरे वाह। दिस इज नॉट ऑलवेज देयर इन एवरी गोलू, दिस इज जस्ट सम क्रिएटिविटी that I have आपने हर मोदी घर घर मोदी। अब हर घर मोदी है, तो हमने सोचा हमारे घर और में दरवाजा खोल दिया जाए मोदी और उनके मनपसंद चीता भी आ गए हैं। हाँ जी, उनके चीता भी आ गए हैं, और जिराफ भी है, शेर भी है। हाँ। वाह। तो थोड़े छोटे मोटे हमने ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स भी हैं, हाँ, हमारे वो कैंगरूज भी हैं, कूकाबरा भी है उधर। क्या बात। मैं चाहूंगा कैंगरूज और कोआला भी यहाँ पे मोदी जी के वन में पहुंच जाएं। तो पहुंचा देते हैं, क्या अगर पहुंचा आप देते हैं? तो हम एक मिनट में पहुंचा देंगे। वो तो फोन लगाते हैं मोदी जी को। हाँ, और क्या, ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग लगा रखा है, उधर हमने इंडिया का फ्लैग वाह, लगा दिया है। क्या बात है। इस तरह से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज इतना आपने मेहनत की है। कितना टाइम लगता है आपको ये लगाने में? खिलौनों को हर साल हमको पैक करके रखना पड़ता है। हाँ। और जब पैक करके फिर जब खोलते हैं तो उसको तो 2-3 घंटे खोलने में लगते हैं, और फिर करीब करीब 1 दिन पूरा पैक करके वापस रखने में लग जाता है, संभाल के रखना पड़ता है वो इनको खिलौना को। तो it has to be kept very carefully so that they don't get damaged, so that we can keep adding to them every year. That's what we try to do. तो आपके पास खिलौने, आपका बचपन कभी कहीं जाएगा नहीं, दिल और तो बच्चा है मैं जी। तो चाहती हूँ जितने लोग आते हैं नवरात्रि में, they should just keep adding more and more toys into our, so we keep adding golus and keep adding, so more and more people are keeping it, and I'm glad that you could make it. बहुत अच्छा लगा। तो जो गेस्ट आते हैं वो ला सकते हैं अपना गोलू, यहाँ रख सकते हैं, या आपके ही मनपसंद के गोलू? हाँ, तो वी आर वेरी हैप्पी किया। देखो हम लोग क्या, सब लोगों ने आज कलर पैटर्न भी फॉलो किया है। आज का अरे ग्रे है, आज ग्रे है। Look at that, our friends have all followed the grey very nicely. अरे वाह। So a lot of people, they dress up for this sort of thing, so it's really nice. बहुत बढ़िया कलर कोडिंग। हाँ जी। ये आपको इनविटेशन में लिखना चाहिए था। ये हाँ, तो हम वो grey डिपेंड पहन करता है कि किसका। मैंने खुद नहीं पहना। थैंक यू राधा जी, आपने हमें आमंत्रित किया, बड़ा अच्छा लगा। और इतना बढ़िया, इतना सिग्निफिकेंस ऑफ गोलू बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। आप आइए, हर साल आइए, तो बिल्कुल। मोस्ट वेलकम टू कम अगेन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कंजदलायताक्षी कामाक्षी कंजदलायताक्षी कामाक्षी
कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी गंजदलाय ताक्षी कामाक्षी कुंजर गमने कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे मामव शिव पंजर शुगि पंकज मुखि गुरुगुहरंजनि दुरित भंजनि निरंजनि जगदाय दाक्षी कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे मामव शिव पंजर शुगि पंकज मुखि गुरुगुहरंजनि दुरित भंजनि निरंजनि जगदाय दाक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी गंजदलाय दाक्षी राक शशिवदने सुरतने रक्षित मदने रत्नसदने राग शशिवदने सुरतने रक्षित मदने रत्नसदने श्रीकाञ्चन वसने सुरसने शृङ्गाराश्रय मन्दहसने श्रीकाञ्चन वसने सुरसने शृङ्गाराश्रय मन्दहसने एकानेकाक्षरि भुवनेश्वरि एकानन्दामृतभरि भास्वरि एकानेकाक्षरि भुवनेश्वरि एकानन्दामृतभरि भास्वरि एकाग्रमनोलयकरि श्रीकरि एकाम्रेश्वरेश्वरि शङ्करि सा सनि दप मग मनि दप मग सनि दप नि स ग स ग मनि सा सनि दप मग मनि दप मग सनि दप नि स ग स ग मनि सा सनि स ग स मग सनि दप नि सा सनि दप मग सनि स ग मनि कंचदलाय दाक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी गंजदलाय दाक्षी कामाक्षी கடலை போலவும் குளிர் மழையில் நனையும் இளம் பள்ளி போலவும் எனது உயிரும் உடலும் உள்ளமும் நெகிழ நீ வந்து மனமு வந்து கரம் தந்து என் குடலூதும் அழகா கண்ணா குறை தீராயோ காணும் பொருளெல்லாம் உலகன்றி வேறேதும் காணே எங்கும் மலர் விழிகளோடு குழ அசையும் முகமயில் இரகடியும் மனமோகனா அருகில் நீ வருகவே தருணமே கருணை புரியவே அன்புருவே குழலூதும் அழகா கண்ணா குறை தீராயோ இன்னம் என் மனம் அறியாதவர் போல ஈரந்திடல் நியாயமா 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 The same as I'm the same now. Because like we already started. बेसिकली सुहाग का सब चीज है ना वो सब देते हैं तो ये जो आप कर रही है क्या मतलब हल्दी हल्दी
कुमकुम और चंदन, चंद और साथ में थोड़ा सा ऐसे मतलब लेडीज के लिए गिफ्ट वगैरह कुछ छोटा मोटा. थैंक यू गिफ्ट थैंक यू गिफ्ट. Okay, Radha, Thank you. Thank you, Usha. दान आपको थैंक यू फॉर धन्यवाद मनीष जी. Thank you very much. Okay. हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी. Navratri. शुभ जय- नवरात्रि. जय दुर्गा जय माता माता की दी. जय. जोर से बोलो जय माता दी. जय. एंड थैंक्स टू हमारा कैमरामैन जो कि सेंथिल भाई हैं.